So very good evening all of you. Welcome to our channel. So today we are going to discuss the topic that is directions. आपको पता ही है कल भी हम लोग directions discuss किए थे. तो obviously आज जो है discussion part 2 मतलब direction को हम और भी direction के और भी किस तरह के question हो सकते हैं. What will be some other patterns of the directions that also we'll see in today's session. तो डायरेक्शंस टॉपिक जो है फिर से मैं एक बार आपको ओवरऑल मतलब एक राउंड में बेसिक बता दूंगा. उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट अगेन लेट मी टेल यू कि आप मेरा कोड यूज़ कीजिए व्हेन एवर यू आर टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. जब भी आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ ले रहे हैं तो इस कोड को यूज़ कीजिए, डेट इज़ AR10 टू गेट द डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फीस. और ये कोड आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी शेयर कर सकते हैं बिकॉज इफ दे आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन in GATE ESE they can also get the discount, or else if they are taking for other courses also on Unacademy they will get the discount. तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्शंस पे. कल मैंने आपको ये बताया था कि जो है आपको नॉर्मली 8 बेसिक डायरेक्शंस होते हैं. 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कंप्लीट रीजन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के कंप्लीट बीच का रीजन नॉर्थ वेस्ट, और वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच ये कंप्लीट रीजन साउथ ईस्ट होगा. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदी में जो है 8 नहीं 10 डायरेक्शन होते हैं. और मैंने कहा था कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं कि 10 डायरेक्शंस कैसे होते हैं. जब इंग्लिश में 8 है तो हिंदी में 10 डायरेक्शंस हाउ इट इज पॉसिबल. तो एनी हाउ, अगर आप जानना चाहेंगे तो आप चैट में पूछ सकते हैं. तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट हाउ द 10 डायरेक्शंस आर देयर इन हिंदी. So moving further, these 8 directions are there, and I said you that clockwise movement, like a person is going east, clockwise if he moves, so clockwise if he moves means right he moves, or else vice versa, right movement means clockwise. Okay, so right movement it will be always clockwise. Similarly, a person is going south and he moves anti-clockwise or left, then from south left is the east. तृप्ति, शैल आई से? डेफिनेटली डेफिनेटली. तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट मूवमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. राइट मूवमेंट मतलब क्लॉकवाइज. साउथ से लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट में आएंगे. ओके, एंटी क्लॉकवाइज. वही ईस्ट से राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो साउथ में जाएंगे. यस तृप्ति, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट. तो हिंदी में 10 डायरेक्शंस कैसे हैं ये तृप्ति जानना चाहते हैं. तो हिंदी में लेट मी टेल यू, पूरब पश्चिम, पूर्व पश्चिम. पूर्व मीन्स ईस्ट, ओके. पश्चिम मीन्स वेस्ट, ओके. पूर्व पश्चिम. उत्तर दक्षिण, उत्तर मीन्स नॉर्थ एंड दक्षिण मीन्स साउथ. उसके बाद आप उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये सब तो सारे हैं ही. लेकिन और 2 एक्स्ट्रा डायरेक्शन क्या है आपको? 2 एक्स्ट्रा डायरेक्शन ये है आकाश और पाताल. हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो आकाश और पाताल भी 2 डायरेक्शन इंक्लूड होते हैं. दैट इज अप एंड डाउन, अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन. ओके, वही मैं कल आपको समझा रहा था कि इंग्लिश में जितने भी डायरेक्शन हैं इंग्लिश में सारे हॉरिजेंटल डायरेक्शन हैं. लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ को वर्टिकल में लिखते हैं इसीलिए हम नॉर्थ और साउथ को यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन बुलाते हैं और ईस्ट और वेस्ट को हॉरिजेंटल डायरेक्शन बुलाते हैं. एक्चुअल में सारे डायरेक्शन हॉरिजेंटल ही हैं. तो हिंदी में सारे डायरेक्शन हॉरिजेंटल हैं, लेकिन ये आकाश पाताल मतलब अप एंड डाउन ये वर्टिकल है. ओके, क्लियर. तो हिंदी के लिए उतना नहीं है, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे तो इंग्लिश में ही आपको समझना है. यस, ओके तृप्ति. सो मूविंग फर्दर, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कल भी हम लोग सॉर्ट आउट किए थे तो आज फिर से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे. तो वन डे जैक लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स. तो मैंने कल आपको बताया था कल के वीडियो में कि हम लोग विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं. तो विदाउट डायग्राम मीन्स सिंपल साउथ 10, दैट्स इट. साउथ की वैल्यू 10 एंड टर्न राइट. साउथ से राइट, साउथ से राइट अभी अभी हम लोगों ने देखा राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब वो वेस्ट में आएगा. साउथ से राइट मीन्स वेस्ट. एंड साइकिल 5 किलोमीटर, तो वेस्ट का वैल्यू 5. एंड देन टर्न राइट फ्रॉम वेस्ट अगेन राइट, सो वेस्ट से राइट मतलब अगेन क्लॉकवाइज, नॉर्थ में वो आएगा. ओके, एंड साइकिल 10 किलोमीटर अगेन, सो 10. एंड टर्न लेफ्ट, अब नॉर्थ से लेफ्ट, लेफ्ट टर्निंग मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, रिटर्न वो वेस्ट में आ जाएगा. ओके, वेस्ट में कितना? साइकिल 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ पे, am I right? 10 किलोमीटर, दैट्स इट, यही था वैल्यू. सी फर्स्ट साउथ 10, अगेन वेस्ट 5,
अगेन नॉर्थ 10, अगेन वहां से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट 10. ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू ट्रैवल टू रीच हिज होम स्ट्रेट. ओके, सीधा कितना डिस्टेंस कवर करना है. तो कल मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल में नॉर्थ और साउथ, वर्टिकल में नॉर्थ नॉर्थ ऐड होगा, साउथ साउथ ऐड होगा, लेकिन नॉर्थ साउथ सब्ट्रैक्ट होगा. सिमिलरली हॉरिजेंटल में ईस्ट एंड ईस्ट ऐड होगा, वेस्ट एंड वेस्ट ऐड होगा, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट सब्ट्रैक्ट होगा. तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल देखें तो हॉरिजेंटल में हमारे पास वैल्यू, तृप्ति का कहना है ए आंसर, वेरी गुड तृप्ति. देखते हैं तो वेस्ट में हमारे पास कितना है, वेस्ट और वेस्ट, हॉरिजेंटल में सिर्फ वेस्ट है तो वेस्ट प्लस वेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वेस्ट इट इज टोटल 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और वर्टिकल में अगर हम देखें, वर्टिकल में देखें तो साउथ और नॉर्थ है, और साउथ और नॉर्थ सब्ट्रैक्ट होके साउथ 10 नॉर्थ 10, मतलब ये जीरो हो गया. तो ओवरऑल वो वेस्ट में 15 किलोमीटर है. तो नो डाउट ए ऑप्शन तृप्ति यू आर करेक्ट, दैट इज 15 इज द आंसर. ओके, अगर हमें वर्टिकल में भी आता तो कल मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर कर देते हैं. हम राइट, क्यों करते हैं ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम से ही करते हैं, वो भी मैंने कैसे करते हैं वो क्लियरली मैंने बताया था क्यों ये डिराइव हुआ. दैट्स इट, क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शैल आई से विथ फिगर, शैल आई ड्रॉ द डायग्राम एंड से तृप्ति. If you want, I can draw the diagram, or else if it is clear, we can go to the next question. Okay, if you want with diagram, you can say, else we can proceed. Clear, very good. So let's go to the next question. Here you can see A, B, C, D are standing. Yes, yes. A, B, C, D are standing on the four corners of a square. तो यहाँ पे आपको स्क्वायर के फोर कॉर्नर्स में ए बी सी डी हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं. ए बी सी and D. Okay, A, B, C, D are standing on the four corners of a square piece of plot as shown in the given figure. They start moving and the movements are explained in each of the question. तो आगे वो मूवमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिए रहेंगे. क्वेश्चन का मतलब क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं उसके अनुसार से ऑप्शंस भी दिए रहेंगे. वी हैव टू सॉर्ट इट आउट. ओके, तो आगे बढ़े, लेट्स सी द क्वेश्चन. ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 2 से 5 तक सारे क्वेश्चन जो हैं, आगे के 2 से 5 तक क्वेश्चन जो है इसी प्लॉट क्वेश्चन पे डिपेंडेड है. तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन डी स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगोनली. जहाँ पे डी है वहां से वो डायगोनली मूव करने लगता है. डी स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगोनली. आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट. आधी दूरी जाकर, हाफ डिस्टेंस जाकर राइट टर्न करता है. Walks some distance and turns left. Which direction D is facing now? So can you tell me? In the chat you can mention whatever option you are getting. A southeast, B northwest, C southwest and D north. Which direction D is facing at the end? So see, at the end means first D was here. I am explaining you. Once you get the answer you can say in the chat. So Tripti says that there should be the A answer. Okay, very good. So in the D is here. Okay, from here, first what the D does, crosses the field diagonally. Diagonally means like this. Okay, half distance पहुंचता है, मतलब यहाँ पे पहुंच जाता है D. After walking half the distance, he turns right. Right means clockwise. So ऐसे right means, मैंने कहा था right and left till the time they are not mentioning the degree, it will be always 90 degree movement. तो 90 degree turn करेगा right. ओके, राइट में कितना डिस्टेंस जाता है मेंशन नहीं है, सम डिस्टेंस दिया है. वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स लेफ्ट. यहां से लेफ्ट मतलब फिर वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये डायरेक्शन में वो होगा. तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो यहां देखिए मैंने डायरेक्शन भी मेंशन किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये डेफिनेटली आपको नॉर्थ वेस्ट है. नॉर्थ वेस्ट मतलब बी ऑप्शन. आर यू गेटिंग मी? बी, यस तृप्ति, पहले आपने गलत आंसर बोला था, अभी करेक्ट बोल रहे हैं बी. यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है, कोई डाउट नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग बी ट्रैवल्स स्ट्रेट टू सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. He turns right and walks 7 kilometer towards D. Again he turns right and walks 8 kilometer. Then finally turn right and walk 7 kilometer. How far is he from the original position? Come on, इसका आंसर बताइए. तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं.
ओके आपका जो भी आंसर आएगा आप चैट में भेजाइएगा। ऑप्शन ए 7 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 3 kilometer. So let us understand they are talking about B. B means this person. B is here. Okay. B travels straight to C at a distance of 10 kilometer. पूरा 10 kilometer distance वो cover किया. Okay. This complete distance 10 kilometer. So Tripti says that C should be the answer, that is 2 kilometer. Okay देखते हैं. तो 10 kilometer cover किया. He turns right. Right means 90 डिग्री. ओके 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर मतलब पूरा नहीं, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. मोर देन हाफ इट वुड बी, बट नॉट द कंप्लीट, नाइदर द हाफ, because total here it is B to C is 10, so this is a square plot, so C to D will be the 10, but he has covered only 7 kilometer here. Okay, after covering 7 kilometer he again turned right and walks 8 kilometer. So right turn means like this. Okay, walks 8 kilometer. 8 kilometer means again not up till the end. Okay, only up till here, so this is 8 kilometer. Okay, up till the end it will be 10 kilometers, so 8 kilometer. Then finally turn right, from here also right, and walk 7 kilometer, so 7 kilometer here. So this is 7, so obviously this part from here to here it will be 7, if I am not wrong. 7 kilometer, sorry, this will be 8 kilometer, opposite side 8 kilometer, 8 kilometer. This is 7 and this will be 7 kilometer. So this rectangle is formed. So they are asking you, this was the starting point. The starting point of B was this one. Okay, and the destination is this one. How far it is, this part how much it is. So this is exactly 2 kilometer, because 10 minus 8, 10 minus this 10 is complete from B to C. In that this is part is 8, so 10 minus 8, so 2 kilometer, that is C option. Very good Tripti, exactly. Okay, no doubt. Without figure also you can do. Without figure also you can do. Very simple, that C traveled a distance of 10 kilometer, sorry, B traveled a distance of 10 kilometer towards C. So B to C it went 10 kilometer. Which direction it went? So east. So east 10, directly writing the values. Turn right, from east right means turning south. Okay, south how much? 7 kilometer. Okay, again turn right, so from south right means west. Okay, walk how much? 8 kilometer. Then finally turn right. Okay, again right means from south right it will come, sorry, from west right it will come north. North 7 kilometer. So south 7, north 7 cancel, east 10 and west 8, so it will be east and west will be subtracted. So how much it will come? East 2, so definitely 2 kilometer. Without figure if you want to go, because I said you yesterday in some question without figure also we can sort it out. Okay, next one. So next was A, B, C and D walk diagonally opposite corners, and from there B and C walk 1.5 side anti-clockwise, while A and D walk one side clockwise along the sides of the plot. Okay, where is D now? This you have to say, where is D now? First option at the northwest corner, second option at northeast corner, third option at southwest corner, and D at north corner. So where is D now? So let us understand, A, B, C, D walk diagonally opposite corners. Okay, whatever answer you will get, you can mention in the chat. So let us understand, A, B, C, D diagonally opposite. So यहाँ पे further they have mentioned diagonally opposite means now A is here. So A will reach where? Diagonally opposite means A will reach here. And obviously this C will reach where? C will come here. This is diagonally opposite if I am not wrong. A and C. Further B and D also same. So here D will come in the place of B, and here in the place of D, B will come. Am I right? Here B will come. It's visible? Yes? Okay. So now after that diagonally opposite, from there B and C walk 1.5 side clockwise. So B will walk clockwise. B, where is B now? So B will walk clockwise. Clockwise means one side here, okay, and half side here. So B will reach at this position. This is the final position B reached. C also same. C will walk one side this, okay, clockwise it has to walk, and half side here. So C final position will be, sorry, this is not C. Let me tell you, C is here. So C clockwise means C will go like this, one side, okay, then half side. So C final position is this one. Clear? Now A and D.
walk one side clockwise. Where is A now? A is here, so he will walk clockwise one side. So A final position will be here. Where I am keeping double tick, that is the final position for A. And D, where is D? D will walk clockwise, so D final position here, one side only. So D is the final position, is the this. So they are asking you where is D now. So what is this direction? What is this direction? This is north, this is east. So D is where final position of the D is northeast corner. So northeast, that is the option B. Yes, exactly, Tripti, option B. Very good. Clear? Next question. A and D walk 1.5 length of a side clockwise and anti-clockwise respectively. Respectively means A walks clockwise and D walks anti-clockwise. Which one of the following statement is true? So they have given you the option as a some statements. You have to say which statement is correct. First statement, they said that A is at the midpoint between B and C and D is at the corner originally occupied by A. Second, they are saying, second option, A and D are both at the midpoint between C and D. Third statement, they are saying, third option, A and D are both at the midpoint between B and C. Instead of C and D, they said B and C. Okay. So, and last option, none of these. So which statement is correct? You have to find it out. So let us understand, A and D walk 1.5 length side clockwise and anti-clockwise. First we have to take A. Okay, A has to go clockwise 1.5. So 1 this is, okay, complete up till end, and half this is. So this is the final position A reached. Am I right? Clockwise, because A is going clockwise. So Tripti says that option C should be there. Let's see. And D goes anti-clockwise. D is going anti-clockwise. So D anti-clockwise means D, how we will go? D is this position from here, anti-clockwise one side here. Okay, one side up till here, and from here this side. So here is the D final position. So I think A and D are at the same position. Okay, now that's it. After that, first statement, they said A is midpoint between B and C. B and C, no doubt. And at the D at the originally occupied by A. No, D is together there with A. So first is wrong. Second option, they are saying A and D are both at the midpoint between C and D. If this is not possible, because how can D two times it will come? So anyhow, this is wrong. A and D are both between B and C. Between B and C. Yes, this is the correct answer. So C is the true statement. Yes, exactly, Tripti. C is the correct true statement. Clear? Yes. So moving to the next. C. Further, brainstorming 6 to 8 will be based on this. Means 6 to 8 means 6, 7, 8. Further 3 questions will be based on this data. So read the following information carefully and answer the question below it. 6 flats on a floor in in 2 rows facing north and south are allotted to P, Q, R, S, T, U. So 6 flats are given to them. Half of them I think will be north facing and half of them south facing. Means 3 will be north facing and 3 will be south facing. Like this the allotment is done. Okay, to P, the person P, Q, R, S, T and U. These are the person name. Q gets north facing flat and is not next to S. Q is getting north facing flat and is not next to S. Not next to S. S and U get diagonally opposite flats. S and U are getting diagonally opposite flat. R next to U gets south facing flat and T gets north facing flat. So this is the data given to you. Based on this they are asking you the question. Let us go to the question. Okay, so question is, which of the following combination gets south facing flat? Okay, so first we'll do the arrangement, then we'll see the question. Okay, if you have done the arrangement you can answer them. Just mention in the chat question number 6, third option, first option, which one is there. Similarly, question number 7, if the flat of T and P are interchanged, whose flat will be next to you? In this also, which one is the correct answer? Question number 7.
And question number 8, the flats of which of the other pairs SU is diagonally opposite to each other except SU? Okay, so these are the three questions. So if you get the answer, mention it. Sixth question this answer, seventh question this answer, eighth question this answer. So anyhow, Tripti said B. Let me check it out, which one, which question, sixth, seventh or eighth. Okay, so I am explaining it. See, six flats are there. So north and south facing, so like this facing it is south, and like this facing it is north. So let's say the six flats are like this. 1, 2, 3 flats here. 1, 2, 3 flats here. Okay, and I can say the doors like this. These are all facing towards south. Okay, and these three are facing towards north. Clear? Okay, further what they are saying, Q gets north facing flat. Q should be always north facing. Means I can say Q, it should be like this flat, north facing flat. Okay, and is not next to S. Means none of the side S should come. Q either side, S won't come. Okay, be careful, because some people get confused, they do not read this not next to S. S and U get diagonally opposite flats. So if I can say S is here, then U will come here. Okay, diagonally opposite. If S is this side, then U will come this side. Diagonally opposite flats. R next to U. R next to U means R is here. Okay, R next to U gets south facing flat. Okay, R next to U gets south facing flat. So this is R getting north facing flat. So obviously U should come here and then S should come here. Okay, because why like this? Because R is exactly next to U and R is getting south facing. So R will come here. Is it clear? Are you getting me? Okay, T gets north facing flat. Okay, now we know that S, if S is here, Q will not come in the middle because Q won't come here. So T is getting north facing flat, so T is here. Okay, now who is left over? Sorry, T is getting north facing flat, so T will be here because Q won't come, so Q is here. That's it. Okay, so who is left over? P, so P will be here. That's it. This is the arrangement. So arrangement is P, R, U are getting south facing flat and S, T and Q are getting north facing flat. Am I right? So first question was, which of the following combination gets south facing flat? So south facing, who all are getting? Who all are getting south facing? That is U, R and P. They are getting south facing flat. So U, R, P, that is the B, option B. Clear? Yes, any queries, doubt? Yes, Tripti, you are correct. You said B. Next question was, if the flats of T and P are interchanged, T and P, they will interchange their flat. T और P अपने flat को interchange करेंगे, तो whose flat will be next to U? U के बगल में किसके flat होगी? तो T और P के change करना है. तो T and P, where is T here? T is here. So now T will reach to this place and P will come to this place. So who will be the next to U? So U next is always R, no changes in that. So U next is no doubt R itself. So U next is R. So here also B option. I think Tripti said for this as well the B. Is it clear? Next question. The flats of which of the other pairs SU is diagonally opposite to each other? SU के अलावा और किसका फ्लैट diagonally opposite है? SU के अलावा, living SU. So SU, these are there diagonally opposite. So who else are diagonally opposite? That is P and Q. P and Q are next the diagonally opposite. So for this P and Q, that is the D option, the last option. Clear? Yes. Shall we move further? Now moving to the further question. See, A is 40 meters southwest of B. A is 40 meters southwest of B. C is 40 meters southeast of B. Then C is in which direction of A? This is the question.
So option they have given south, first option, second option northeast, third option west, and the last option D option is east. Come on, once you get the answer you can tell me. Okay, so let us understand. A is 40 meters southwest of B. So north, south, east, west. Okay, southwest, southwest. So A is 40 meters southwest of B, southwest of B. So if B is here, the southwest means like this the direction. This is the direction of southwest. So 40 meters southwest. This is 40 meters and here is A. Okay, now A is 40 meters southwest of B. Okay, C is 40 meters southeast of B. Southeast means which one? This is the direction southeast. So C is southeast of B. So here is the C. This is also 40 meters. Okay, now they are asking then C is in which direction of A. A के किस direction में? We can even say the distance, but no need, they are not asking you the distance because this is 90 degrees. So you know very well that Pythagoras theorem, we can find the distance between A and C as well, but no need here. Only they are asking then C is in which direction of A. So what is this direction called? What is this direction called? It is called as east. So no doubt the last option, east. Clear? So next question. Moving to the next question, Ravi wants to go to the university. He starts from his home, which is in the east, and comes to a crossing. The road to the left end ends in a theater. Straight ahead is the hospital. In which direction is the university then? So which direction university will be there? So try to understand that Ravi started. So option they have given west, east, north and south. Which direction is the university means leftover road is to the university, leftover road. Okay, so he came to a crossing. First of all, let us understand your answer. You can mention in the chat. So Ravi wants to go to university. He starts from his home, which is in the east. So east from here. This is east. From here he started. Okay, from east he started going straight. Okay, he comes to a crossing. So like this, he comes to a crossing. So here three roads is getting. Okay, comes to a crossing. The road to the left ends to a theater. So left means how it will be anti-clockwise. So this ends to a theater. So theater is here. Am I right? Straight road ends to the hospital. This end reach to the hospital. And obviously the right road left over. This right road will be going to the university. Am I right? So in which direction is the university? What is this direction called? This direction is called what? That is north. So no doubt C option, that is north. Clear? No confusion, very simple. Understand the sentence and just proceed. Very simple it would be. Okay, no shortcuts, tricks, something like that. It is aptitude, just understanding and sorting out. Now next question. No doubt the question looks very big, but I don't think so that the solution will be this much big. So here the question they have given, a child is looking for his father. Oh, in the question the child is looking for a father. Normally child looks for mother. So anyhow, child is looking for the father. He went 90 meters in the east before turning to his right. He went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place. 30 meters from this point, okay, full stop. His father was not there. From there he went 100 meters to his north before meeting his father in a street. How far did the son meet his father from the starting point? So how far means the slant distance. Don't add all these. Okay, the slant distance they are asking you. So without diagram, I'll explain. If you want with diagram, you can mention in the chat. I can say you with diagram also. But without diagram, I am saying here. See, first what he did, he went 90 meters in the east. North, south, east, west.
90 meters in the east. So east I wrote 90. Okay, from there he turned, before turning to his right means from there he turned right. From east right means clockwise, that is south. Okay, so south he went 20 meters. Before turning to his right means again from south he turns right, means west. So west. Okay, uncle's place at 30 meters. So west is 30. Okay, from this point he did not find his father at the uncle place. From this point his father was not there, so from there he went 100 meters to the north. So directly they said the values north 100, that's it. Okay, and he met his father there. So how far he is from the starting point, they are asking. So very simple, east and east will be added, west and west will be added in horizontal, and in vertical south and south will be added, north and north will be added, and just opposite will be subtracted. Am I right? So here if I see in horizontal it is east 90, west 30. So overall what we get after subtracting, east will get how much? 60 if I am not wrong. Okay, so east west done. Now vertical if I see, south and north is given. So bigger value is north, south 20 and north 100. Subtracted means how much it will come? North 80. So horizontal square, I said you already that root over horizontal square plus vertical square. So root over 60 square plus 80 square if I am not wrong. So this will be root over 60 square is how much? 3600 plus 80 square is how much? 6400. So this is actually root over how much? Root over 36 plus 64, that is 100 and 3 zeros. So my dear friend, 2 zeros you will get, square root of 2 zeros is 1 0 here. Again for 2 zeros it will be 1 0. How many zeros it will come? Sorry, there are no 4 zeros only. 4 zeros only. So total 4 0, again for 2 0 you will get 1 0. So 2 zeros, and for 100, not 100 even, 1. For 1 square root is 1 only, so 100. Okay, so 100 meters. So B option, this is the answer, 100 meters. Clear? If you want with diagram, I can say with diagram, but because you don't want, you are not mentioning in the chat, so I think it is clear. Shall we proceed further? If you want with diagram, I can say you with diagram, but I think this is the easiest method. Without drawing any diagram, we can find it out. Okay, so moving further, I am facing east. I turned 100 degree in the clockwise direction and then 145 degree anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? I said you very simple that yesterday also we have seen the similar question. 100 degree clockwise, 100 degree clockwise and 145 degree anti-clockwise. So it is same like north and south. यानी तो आप ये भी बोल सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट जैसा ही है. तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. बिगर कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज बिगर है. कितना बिगर है सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 45 डिग्री. सो ओवरऑल आई कैन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स इट. ओके, so I have to move 45 degree anti-clockwise. From where? From east. So from east 45 degree anti-clockwise, only 45 degree. So what is this direction? That is northeast. So northeast, that is the C option. Clear? Yes. So more further question. So next questions. Now question number 13 and 14 will be with the same data. Whatever data they have given you, with this data, question number 13 and 14, further two questions will be there. So study the information given below carefully and answer the question that follow. On playground, it should not be playing ground, it is playground. Okay, anyhow, extra ing is there. On playground, Dinesh, Kunal, Nitin, Atul and Prashant are standing as described below, facing north. Means all are facing north. Okay, but they are standing at some distance which are mentioned below. Kunal is 40 meters to the right of Atul. Dinesh is 60 meters to the south of Kunal. Nitin is 25 meters to the west of Atul. Prashant is 90 meters to the north of Dinesh. So these are the values given. So let's understand this. Let us draw the diagram that will see the question. North, south, east, west. All are facing north. Okay. First they are saying Kunal is 40 meters to the right of Atul. Let's say Atul is here.
this point, this is Atul's place. So Kunal will be right. Right means like this, okay, 40 meters here. So this is total 40 and here is the Kunal. Clear? Further, Dinesh is 60 meter to the south of Kunal. Kunal के साउथ में मतलब like this 60 meter. Here 60, if you say this one, here is the Dinesh. This is Dinesh position. Okay, now Nitin is 25 meter to the west of Atul. अतुल के वेस्ट में Nitin है. Here is the Nitin. Okay, how much gap from Atul? That is 25. So this is 25. Okay. प्रशांत इज 90 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश के नॉर्थ में, मतलब ये 60 तो है ही नॉर्थ, और हमें आगे कितना जाना है, और हमें जाना है 30 आगे. सो यहाँ पे है प्रशांत. सो हियर इज द प्रशांत. ओके, सो आई थिंक द डायग्राम इज क्लियर टू यू. प्रशांत, Kunal, Dinesh, straight line, that is vertically, Kunal in the middle, and horizontally you can say Nitin, Atul and Kunal. Okay, and the gaps are also clear to you. Okay, now let's see the question. So first question is, who is northeast of the northeast of the person who is left to Kunal? Try to understand. Who is to the northeast of the person who is left to Kunal? Kunal के लेफ्ट साइड में जो पर्सन है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तो कुणाल के लेफ्ट साइड में कौन पर्सन है? कुणाल के लेफ्ट साइड में, तो दिस इज कुणाल. कुणाल के लेफ्ट साइड में कौन है? अतुल. तो अतुल के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? अतुल के नॉर्थ ईस्ट मीन्स विच डायरेक्शन? लाइक दिस. तो अतुल से नॉर्थ ईस्ट कौन है? दैट इज प्रशांत. सो आई थिंक फॉर दिस द आंसर विल बी नो डाउट प्रशांत. प्रशांत मीन्स none of these, because in the option they have given Atul, Dinesh, Nitin, but Prashant they have not given. So here the answer is none of these. Hope I am clear to you. Yes. So moving to the next question. Next question is, if a boy walks from Nitin, meets Atul, followed by Kunal, Dinesh, then Prashant, how many meters has he walked? Travel the straight distance all through. Okay, तो अब डायग्राम में चलते हैं. हमें ये समझना है कि नितिन, वो लड़का जो है नितिन, अतुल, कुणाल, फिर दिनेश और प्रशांत. ओके, तो हाउ मेनी मीटर्स हैज ही वॉक्ड? ओवरऑल टोटल कितने मीटर्स वॉक किया वो हमें देखना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम नितिन टू अतुल, फ्रॉम अतुल टू कुणाल. ओके, फ्रॉम नितिन टू अतुल, that is 25. From Atul to Kunal, that is 40. So 25, then 40. Am I right? From Kunal to Dinesh, that is again 60. Okay, and from Dinesh to Prashant, at the end he meant Prashant. So from Dinesh to Prashant means this 60, and again further this one also. So total Dinesh to Prashant is 90, this 30 also. So again in this plus 90. So total how much he traveled? From Nitin to Atul 25, then Atul to Kunal 40, and from Kunal to Dinesh 60, and from Dinesh to Prashant 90. So total how many meters he walked? So if I am not wrong, 60 40 is 100, 190 plus 25. 190 plus 25. So 190 plus 25, how much it is? 190 plus 25, how much it is? So it is very simple, 215 meters. Clear? If you are not able to understand, you can say me, I can explain you once again. Clear? Okay, so let's go further. The question is, in the Olympic Games, the flags of 6 nations were flown on the mast in the following way. The flag of America was found to the left of Indian tricolor and to the right of flag of France. मतलब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस जो है क्लियरली अमेरिका के फ्लैग के बारे में बता रहा है. द फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज फाउंड लेफ्ट ऑफ इंडियन फ्लैग एंड राइट ऑफ फ्रांस फ्लैग. दैट्स इट. नो नीड टू गेट कंफ्यूज.
द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज टू द राइट ऑफ इंडियन फ्लैग एंड वॉज टू द लेफ्ट ऑफ फ्लैग ऑफ जापान। उसके बाद कॉमा दिया है, तो जापान के बाद कॉमा दिया है, मतलब अब जापान की फ्लैग के बारे में एक बार यहाँ पे कॉमा आया, तो अब आगे के सेंटेंस जो है जापान के बारे में बताएंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में नाउन के बाद अगर कॉमा आएगा तो फिर आगे का सेंटेंस उसके बारे में, उस नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो जापान विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना, मीन जापान जो है वो चाइना के फ्लैग के लेफ्ट में था। फाइंड द टू फ्लैग्स विच आर एट द सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर में कौन से दो फ्लैग हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका इंडिया, सेकंड ऑप्शन जापान ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ ऑप्शन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर जो आएगा आप बता सकते हैं चैट में। तो लेट अस अंडरस्टैंड हियर, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम लोग अमेरिका के फ्लैग के बारे में डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया, अमेरिका का फ्लैग। इंडिया के फ्लैग, ये इंडिया का फ्लैग है, इसके लेफ्ट में अमेरिकन फ्लैग है, ये अमेरिकन फ्लैग हो गया। आर यू गेटिंग मी? ये अमेरिका का फ्लैग हो गया, ये इंडिया के फ्लैग में के लेफ्ट में, ओके। एंड राइट ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के राइट में, मतलब फ्रांस यहाँ पे आ गया, फ्रांस के राइट साइड में अमेरिका का फ्लैग है, ओके। फर्दर दे आर सेइंग द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज टू द राइट ऑफ इंडियन फ्लैग, इंडिया के फ्लैग के राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी हियर, ओके, ऑस्ट्रेलिया विल बी हियर। नाउ बट टू द लेफ्ट ऑफ फ्लैग ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जो है वो जापान के लेफ्ट साइड में, तो जापान का लेफ्ट साइड मतलब जापान का लेफ्ट साइड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ गया, ओके। अब जापान के बाद कॉमा है, वी जापान फ्लैग वॉज लेफ्ट टू द फ्लैग ऑफ चाइना, तो चाइना के लेफ्ट में जापान का फ्लैग है, दैट्स इट, ये हो गया अरेंजमेंट। तो फ्रांस का फ्लैग, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चाइना, दैट्स इट द अरेंजमेंट, ओके। तो यहाँ पे पूछे थे बीचों बीच कौन से दो कंट्री का फ्लैग है एग्जैक्टली मिडिल में, तो वो क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों एकदम मिडिल में है, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? सिंपल था अरेंजमेंट, यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर स्टार्टेड फ्रॉम हिज पुलिस स्टेशन ऑन इंस्पेक्शन ड्यूटी। अच्छा, समीर जो है वो पुलिसमैन है, इंस्पेक्शन पे जब पुलिस स्टेशन से निकल रहा है तो इंस्पेक्शन के लिए, तो डेफिनेटली वो पुलिसमैन है, इंस्पेक्शन ड्यूटी के लिए निकला। After traveling straight for a distance of 4 kilometers, he turned left for the market and traveled straight for another 200 meters and turned left and traveled straight for 600 meters. How far is Samir from the police station? देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आपको नहीं दिया गया है, तो आप कोई भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन ले सकते हैं, विद फिगर भी बना सकते हैं, विदाउट फिगर भी बना सकते हैं। विद फिगर तो कोई भी एक डायरेक्शन मान के आप नॉर्थ में स्टार्ट हुआ या कहीं वेस्ट में स्टार्ट हुआ, कोई भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया, दैट्स इट। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको फिगर से जानना है तो आप चैट में बताइएगा, अगर फिगर से, मैं यहाँ पे फिगर से नहीं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है, ओके। हाउ फार, तो रूट ओवर हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, दैट्स इट। वही मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था डिटेल में। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि वो ईस्ट की तरफ गया, मान लेते हैं ईस्ट फेसिंग उसका पुलिस स्टेशन था, तो ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, ईस्ट 4 हो गया। देन ही टर्न लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ हो गया। नॉर्थ में कितना वॉक किया, 200 मीटर्स, 200 मीटर्स, बी केयरफुल, तो ये आपको 0.2 किलोमीटर लिखेगा, ओके। 200 किलोमीटर मत लिख दीजिएगा, 0.2 किलोमीटर, 200 मीटर्स है। excuse me, from there he turned left, from north left means again anti-clockwise west, okay, west में 600 meters means 0.6, that's it। तो आपको पता है कि रूट ओवर हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, तो वर्टिकल में आपको सिर्फ नॉर्थ 0.2 है, तो रूट ओवर 0.2 का स्क्वायर, ओके, यही होगा, प्लस हॉरिजेंटल का स्क्वायर, वर्टिकल में तो आ गया हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में ईस्ट और वेस्ट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ईस्ट आपका 4 है और वेस्ट 0.6 है, तो सब्ट्रैक्ट करके ईस्ट बड़ा होगा, ओके। ईस्ट बड़ा होगा, ईस्ट कितना बड़ा होगा, डिफरेंस कितना आएगा, ईस्ट विल कम, इट विल कम 3.4 किलोमीटर, इसका स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये क्यों है रूट ओवर वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजेंटल स्क्वायर, ये मैंने कल के डायरेक्शन पार्ट 1 में आपको बताया है, तो अगर कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। पाइथागोरस थ्योरम से ही है, फिगर से भी मैंने बताया था वहां पे।
तो ये हमें क्या होगा, रूट ओवर 0.2 का स्क्वायर. 0.2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, हाउ मच इट विल बी, 0.2 स्क्वायर. कम ऑन फास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 0.04 प्लस 3.4 का स्क्वायर. 3.4 का स्क्वायर हाउ मच विल बी गेटिंग, 3.4 का स्क्वायर if I am not wrong 11.56. yes, okay. तो दोनों को ऐड करेंगे तो it will be is equal to root over 11.56 plus 0.04 कितना आएगा हमें, 11.6 आएगा. सो रूट ओवर 11.6. तो ये कितना होगा, आप अपने कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो डिवीजन मेथड भी है. 11.60 ये लीजिए, यहाँ पे आपको कितना हो गया डिवीजन में, 3 3 जा 9, ये 3 ये 6 बन गया. ओके, ये आपको रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 260. तो 6 के आगे हम कितना लिखेंगे कि 260 के नज़दीक आएगा. अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 4 जा 16, 6 1 ईयर, 6 4 जा 24, 125, यस 256. तो 4 लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो इट विल बी 256 मीन्स वी नियर बाय टू 3.4. 3.4, तो 3.4 किलोमीटर, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर. अगर आपको फिगर से समझना है, डायग्राम से समझना है तो वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर आप चैट में नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ऐसे ही प्रोसीड करते रहूंगा. ओके, तो मूविंग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मैन वॉक्स 30 meters साउथ, देन टर्निंग टू हिज राइट he walks 30 meters, then turning to his left he walks 20 meter, again turning to his left he walks 30 meter. How far is he from starting position? मीन्स वही आपको वो स्लैंट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, रूट ओवर हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर. तो ऑप्शन 1 30 मीटर्स, ऑप्शन 2 40 मीटर्स, ऑप्शन 3 50 मीटर्स, ऑप्शन 4 दैट इज 60 मीटर. बताइए अगर आपका आंसर आ रहा है तो बताइए. बहुत ही सिंपल है, मैं एक्सप्लेनेशन तो दे रहा हूँ, आपका आंसर भी चैट में आते रहना चाहिए. तो मूविंग फर्दर, अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स साउथ, तो विदाउट डायग्राम साउथ 30. ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो साउथ 30, देन टर्न राइट फ्रॉम साउथ राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, तो वेस्ट आ जाएगा. तो वेस्ट की वैल्यू कितनी है, वेस्ट ही वॉक्स अगेन 30 मीटर्स, तो ईयर ऑल्सो 30. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट from west left, left means again anti-clockwise, that is south. Coming back to south, there he walks how much, 20 meters, so south 20. Again turning to his left from south left, that is anti-clockwise east, so east. How much in the east, that is last 30 meters, so this is 30. How far is he from starting point? So very simple, if you check out with vertical only we have south 30 south 20, so it becomes vertical, that is south 50. And in horizontal, if you see horizontal, west and east are there, so east 30 and west 30 both get cancelled, if I am not wrong. East 30 and west 30 both get cancelled, so overall we get south 50, that is 50 meters, that's it. If we are getting in horizontal also some value, then we'll find it out, that is root over horizontal square plus vertical square. So simple it is. Next question. Girish walks 8 kilometers towards east and turns right and walks 3 kilometers straight. Again he turns right and walks 12 kilometers straight. Now how far is he from the starting point? So same thing. Here option they have given 5 kilometers, 6 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer. So directly without diagram we can go for 8 kilometer east. First of all let me write the directions, north, south, east, west, and let me remind you your answer should keep on coming on the chat. So north, south, east, west. Now first he goes east, so I have written here directly the value, that is east. Okay, how much, 8 kilometer. From east right turning, that is clockwise, that is north. So north, how much it will be, north 3 kilometer. Okay, again he turns right from north right, that is west clockwise, so west, there he walks 12 kilometer, so west 12, that's it. Okay, so if you check out in vertical, we have vertical north only, we have 3, that's it. Vertical no more direction. Horizontal if we see, we have east and west, so east and west will be subtracted, bigger is west, so west how much it is, 4. So I said you it will be root over horizontal square, that is 4 square, plus vertical square, that is 3 square, so it will be root over
4 square is 16 and 3 square is 9. Very simple. So it will be root over 25. Root over 25 means how much you will be getting? 5 kilometers. So 5 kilometers. Square root of 25 is 5. Clear? Very simple it was. Okay, why we are going without diagram? If you see the part 1 of direction, you can easily understand. So see that video. And more question if you want to practice, let me tell you that you can practice more question. That is also free. That is if you join the special class. If you want to join my special class, this special class is also free. For this I can guide you. You have to just download Unacademy app. Okay, download this app, and in that app go to GATE and ESE channel. In that channel search this name, Amulya Ratan, that is my name. Okay, in the left hand side screen you can find my name. In GATE and ESE channel you will get my profile. Okay, more further details also are given in the left hand side corner of this screen. So find my profile, and in that profile just on the notification. अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया उस प्रोफाइल पे जाके, तो जब भी मेरी स्पेशल क्लास होगी अरेंज, जब भी स्पेशल क्लास रहेगी आपको उसके अलर्ट मिलेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। ओके, और वो स्पेशल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको भी मिस मत कीजिए। प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एज मच एज पॉसिबल। फर्दर अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यू कैन यूज माई कोड AR10 टू गेट द डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फीस। और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल सके। गेट ESE में तो ये कोड वैलिड ही है। मैं आपको बता दूं ये कोड बाकी कोर्सेज जो अनअकैडमी में है वहां पे भी वैलिड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो डैट एवरीवन गेट्स द डिस्काउंट इन द सब्सक्रिप्शन। ओके, फर्दर मेरे यूट्यूब क्लासेस के लिए आपको लिंक अगर चाहिए, जो क्लासेस हो चुके हैं या अपकमिंग क्लासेस के लिए, तो यू कैन गो थ्रू माय फेसबुक पेज। उस पेज का नाम है अमूल्य रतन एप्टी अनअकैडमी, यानी तो आप इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो करें तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड AR10 टू गेट द डिस्काउंट। ओके, so thank you very much, keep practicing, take care, bye bye, good night.